What is typecasting? So let's see. Converting the definition of typecasting is converting a value from one data type. Please see and read with me also so you can remember this. Converting a value from one data type to another, also called type conversion. See, converting a value from one data type. You have a data type like int, converting to float. That is typecasting. Generally means typecasting. This typecasting. Yes. Why do we need? हम लोग को इसका क्यों जरूरत पड़ा टाइप कास्टिंग का पाइथन के अंदर? पाइथन वुड नॉट मिक्स टाइप्स केयरलेसली. पाइथन टाइप को मिक्स नहीं करता है केयरलेसली. यूजर इनपुट इज ऑलवेज स्ट्रिंग. यूजर का इनपुट ऑलवेज स्ट्रिंग होता है. मैथ रिक्वायर्स नंबर्स नॉट टेक्स्ट. मैथ जैसे इंट में ही होगा, फ्लोट में होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा, स्ट्रिंग में नहीं होता है वो कभी भी. ज्वाइनिंग टेक्स्ट विथ नंबर्स नीड्स कन्वर्जन. कोई भी नंबर को हम लोग ज्वाइन करते हैं जैसे 15+4, वो भी एग्जांपल में आपको बहुत ही अच्छा प्यारा एग्जांपल दिखाऊंगा अभी कि ये कैसे वर्क करता है. ज्वाइनिंग टेक्स्ट विथ नंबर्स नीड्स कन्वर्जन. टाइप ए इम्प्लिसिट. इट्स नॉट वर्किंग. सी, टाइप ए. What is There are two types generally in typecasting, that is implicit and another is explicit. We remember with me, we study, and what I am teaching you here, carefully listen it so you get easily in this series. If you आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे इस सीरीज में, बहुत ही अच्छे से आपको पाइथन समझ में आएगा. बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये देखते हैं पाइथन का टाइप. अरे ये टाइप कास्टिंग का टाइप कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिकली पाइथन खुद से ही करता है. एक्सप्लिसिट जो मैनुअल जो हम लोग करेंगे. अभी हम मैं करके दिखाऊंगा आपको. जैसे ये इंट है, पाइथन कन्वर्ट करता है फ्लोट में. तो इंट जैसे ये इंट मेरा यहाँ पे 10. 10 मेरा एक इंटीजर है, ठीक. ये प्लस की है यहाँ पे, और प्लस के साथ हम लोगों ने लगाया है एक फ्लोट वैल्यू. फ्लोट वैल्यू आपको दिख रहा होगा 3.5. जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 13.5 आपको आएगा. इंट साइलेंटली बिकम्स फ्लोट क्योंकि ये लेस वैल्यू यूज करता है, डेटा लेस लेता है. फ्लोट इसलिए यूज होता है कि ये लेस डेटा यूज होता है. टाइप बी एक्सप्लिसिट मैनुअल जो हम लोग करेंगे. ये स्ट्रिंग में है, इंट दिया है 25. इंट स्ट्रिंग से इंट में करके दिखाएंगे. यूज अ फंक्शन इंट फ्लोट स्ट्रिंग बुलियन. की रूल. व्हाट आर द की रूल्स फॉर यू? डायरेक्शन मैटर्स like this. String to int, int to float. These are the direction. Widening small to large is safe. What I said to you here, it int silently becomes float. This means widening small to large. So this widening small to large is safe. Narrowing may lose data. If you narrow it, it may lose data. So that's why here int silently becomes float automatically. Let's go on next slide. We will see about some many examples. Let's see examples. We will discuss about implicit. Let's discuss an example. So you will open your file here. I have created already a file, that is lecture 4. You also make a file. Make separate files so you can organize by separately. अगर आपको जैसे
एक ही में आप बनाते जाएंगे लेक्चर, लिखे हैं पाइथन, उसके ही अंदर सब चीज आप फाइल बनाए जाएंगे, तो आपको बहुत कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैं अलग अलग बनाता हूँ। लेक्चर 4 का अलग है, तो उसमें आपको जैसे लेक्चर 3 का आप यहाँ देखिए, लेक्चर 3 है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, डेटा टाइप्स इनपुट लेके। तो इसी तरह लेक्चर 4 देखते हैं हम लोग। लेक्चर 4 के इसको राइट शिफ्ट क्लिक करना है आपको, ये आप लोग को पता ही होगा, ओपन विथ कोड आ रहा है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ये न्यू फाइल पे क्रिएट क्या करेंगे, हम लोग सीख रहे हैं टाइप कास्टिंग। टाइप ये ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके रहेगा, अगर आप पैसे बनाते हैं मेरे साथ सेम। डॉट पी वाई, पी वाई क्या है, एक्सटेंशन है। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नंबर, let's see, num1 is equal to input, in, input of, and we have to use double quotes here, and so it will be enter number 1. हाँ, तो नंबर 2, num2 is equal to input हम लोग लेते हैं। ये एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, यू विल नो वेरी क्लियर अबाउट दिस। enter number 2, and we will do print our both numbers. Let's print. We are doing simple, like we are taking number as an input like 10 and 5, and add both numbers. So what we will get? I am talking about that number. You can see what I have done here. Number 1 is equal to this input, number 2 input, and after that I am printing the sum of both. So what you generally get, what you get output of these both numbers when we are doing like this. Let's take a number, for example 10, and number 2, that is 5. So what you will get, please think about this for 5 seconds. I am taking a pause. Let's think what you will get here. You, you generally thought this would be 15. You are wrong. See, why you are getting here 105? Why you are getting? Because you have not specified here integer. This is taking input. This is taking a integer value like 10, 100, any number if you give। अगर आप कोई भी नंबर देंगे इनपुट में तो वो लेगा, ये स्ट्रिंग के बेस पे लेगा, ये ना कि इंटीजर देगा हमको। फिर से मैं समझाता हूँ, जैसे नंबर 1 को हम लोगों ने इनपुट लिया, एंटर नंबर कर, तो यहाँ पे एंटर नंबर किया 10, यहाँ सेकंड नंबर पे एंटर किया हम लोगों ने 5, तो हम लोग को आउटपुट मिल गया 105। ये क्या हो गया, कॉन्केटेनेशन इसको हम लोग बोलते हैं। द कॉन्केटेनेशन ऑफ टू नंबर, दैट इज 105, दिस 105, this is called concatenation. This is not adding of two numbers. To add, we have to simply specify here int of,
int of input like this. Then you will get your clear answer in int. See, int of. Now what we have done here, we have specified a int here. So let's run, delete this. Let's run the code, enter number 10, enter 5. What you will get now? Simply 15 because you have specified here int. So you are getting here 15. What operation you have done here? Print num1 plus num2. That is 10 plus 5 is equal to 15. If you don't specify here int, it takes like string. Generally take it a string because input and any number that takes only string. If you specify here int, then you will get int, integer number. And let's talk about implicit typecasting. What is implicit? I told you implicit is automatically, which done automatically. This widening order, I have told you Boolean int float complex. Python promotes to the wider type of no data lost. Wider type automatically, no data lost here. Python converts automatically to avoid data loss. This is done by implicit typecasting. True. True. We have to know here what is true. True is 1, false is 0. In arithmetic, in Boolean, we can say false is equal to 0. When we give input like 1, we will get true. When we give input like 0, we will get false. Python never converts number to string. Yes, this is important. Like this, you can see here. Wait, I will. This, where we have to know like this. This is a failure mode. Oh, sorry. This. This is a string. This is an integer. When you concatenate both numbers, generally it gives us type error. Why? Because hello is a string and 25 is a integer. So Python never, remember this line, Python never converts number to string. It never string to number is possible. We have seen above here in what where I have coding जहाँ पे मैंने कोड किया था 105 आउटपुट आ रहा था वो उसी वजह से आ रहा था स्ट्रिंग टू नंबर की वजह से उसमें हम लोगों ने देखा था हेलो प्लस 25 क्रैशेज विद टाइप एरर इसको एग्जांपल के साथ भी हम लोग देखेंगे देखते हैं कोडिंग करके इसको कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग क्या करते हैं एक मिनट लेट्स टेक num1 is equal to hello hello num2 is equal to 25 when we do print num1 plus num2 what we get this gives a type error because both are not number and both are not a string so we can't get any output. You can see here what we are getting a type error. This is giving us type error.
can only concatenate string, not int, to string. If what we write here we write hello world. Sorry, world. We write when we write here world. 1 minute. Then you are getting here hello world. String plus string. You will get string. So you got this code. When you get type error, when you are trying to add hello plus 25, it crashes with type error. It can't concatenate it. It concatenate only hello plus string. That is world. When we write hello, your name, hello Ayush, it will print. But when you try to write 25 integer, it will crash. Int plus float. We can see also this example. A is equal to 10, that is integer. Let's code it. Sorry. We are learning with practical examples. So you know very carefully. A is equal to 10. And what's the value of B is 3.5. So what we are doing here, we are adding the integer and float value. So print A plus B. So you will get here 13.5. The answer is 13.5. You got it? This is very easy. If you want to check type, what I have teach you to in data types lecture, you have to simply print 1 minute, print like this, print type of. In this lecture, I have show you. In this coding, I have taught lecture 3. This, you know, na, how we are getting type. So see here, type of this and this. You are getting here float. Float because it's prevent to डेटा लॉस. ये बचाता है अपने आप को डेटा लॉस से पाइथन. यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा. पाइथन कन्वर्ट्स ऑटोमेटिकली टू अवॉइड डेटा लॉस. ये फ्लोट में ही कन्वर्ट करता है. ये हम लोगों ने देखा. और देखते हैं हम लोग. ये एक्सप्लिसिट है. जैसे एक्सप्लिसिट क्या है, यूजर से होते हैं जो हम लोग करते हैं, विच वॉज डन बाय यूजर. सी दिस बाय कोड. int int 9.99. See, a is equal to int of 9.99. Print a. What we get here? What you will get? I am taking here number as a float, but I am trying to change, convert in integer. So you will get simply 9. 9 would be answer. तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर में 9. बिकॉज ये एक इंटीजर है. इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हैं
अरे फ्लोट को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया है, इंटीजर में। तो अगर यहाँ पे हम लोग फ्लोट लिखेंगे, व्हेन वी ट्राई टू राइट हियर फ्लोट, we will get simply float value, that is 9.9. So this is the difference. And next example is you int true and false. Yes, I have told you, when you write like a what int of true, a is equal, b is equal to int of true, b is equal to int of, when we try to print it, b print c, value error we are getting here.